A very good morning, dear students. Welcome to e learning classes of Sacred Hearts. I hope your studies are going well. Previously, we were on chapter number 11, in which we have discussed about marketing mix in the previous lecture. In that, we have started about the first element of marketing mix, that was product, and in that, we have discussed about the branding. Dear students, in our 49th lecture, today we are going to discuss about the other elements of product mix. That means the first product is packaging. What is packaging? Packaging is the basic activity of every company. It can be defined as a set of tasks or activities which are concerned with the designing, production of an appropriate wrapper, container, or bag of the product. That means it is something about the planning and execution of the primary package to the particular product, in which its particular wrapper, container, or the bag is designed. If we talk about the companies, then companies generally and always used to provide the product in the package form. For example, Coke used to come in bottle, Tide used to come in bag, and biscuits come in the wrapper. Dear students, there are different levels of packaging. The very first level is the primary package. It refers to immediate packaging of product. That means the particular packing that contains the good in core is known as the primary package. इट रिमेन्स विद द प्रोडक्ट टिल इट इज़ यूज्ड. और ये कब तक प्रोडक्ट के साथ रहता है? जब तक हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते हैं, तब तक ये पैकेजिंग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ क्या करती है? एग्जिस्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, ट्यूब ऑफ पेस्ट एंड मैच बॉक्स. अगर हम टूथपेस्ट की बात करें तो इट यूज टू कम इन द ट्यूब. तो वो ट्यूब हमारे पास तब तक रहती है जब तक कि हमारे पास, हम लोग क्या करते हैं बेटा? टूथपेस्ट को यूज़ करते हैं. यू कैन सी इमेजेस ओवर हेयर. ऑल दीज आर द इमेजेस ऑफ द प्राइमरी package. Now we will come to the second one, that is the secondary package. These are the additional packaging. ये additional packaging है which used to provide more safety and protection to the product, जो कि आपके प्रोडक्ट को और ज़्यादा सेफ्टी और प्रोटेक्शन क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं. जनरली कस्टमर्स दैट व्हेन दे स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट. और ये जो सेकेंडरी पैकेज है, इसको जनरली कंज्यूमर क्या कर देता है? थ्रो आउट कर देता है जब वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करता है. फॉर एग्जांपल, जो आपका टूथपेस्ट है वो एक टूथपेस्ट की ट्यूब के अलावा एक बॉक्स में कन्फाइंड होकर आता है. सो एज सुन एज आप टूथपेस्ट निकालते हैं तो आप उस बॉक्स को रिमूव कर देते हैं, फेंक देते हैं, और फिर आप उस पेस्ट को क्या करते हैं? यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं. तो यू कैन सी इन द इमेज एज वेल, आपका ऊपर टूथपेस्ट की ट्यूब है और नीचे क्या है? बॉक्स है. तो जनरली हम इस बॉक्स को जैसे ही टूथपेस्ट को ओपन करते हैं, हम इस बॉक्स को क्या करते हैं बेटा? रिमूव करते हैं. देयर कम द नेक्स्ट वन, दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग. एज द नेम इज सिग्निफाइंग, द पैकेजिंग that is specially made for transporting the goods from one particular place to another particular place to provide the safety and security to the product is known as the transportation package. That means the carrying of the goods in the carton so that it cannot be damaged or the quality cannot be deteriorated. You can see over here a complete box is there that is containing the 32 single units in that. That means it will be very easy to transport the good from one particular place to the another particular place when it will be in such a long in such a big carton. Next, we are coming functions or features of packaging. What are the different functions and features? The very first that we have discussed earlier, that the packaging used to provide the protection to the goods from the moisture, breakage, insect, sun, rain, etc. Thereafter, the second one comes identification. विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग द प्रोडक्ट कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड, है ना. जब प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है तो हम उसको ईजिली क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द येलो एंड ब्लैक पैकेजिंग एंड विद द अल्फ़ाबेट के. येलो एंड ब्लैक प्लस के अल्फ़ाबेट, तो हमें पता लग जाएगा दैट इट इज़ समथिंग अबाउट द कोडेक. सो इट ऑल्सो फैसिलिटेट द कंज्यूमर अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट. Next, that is convenience. It is very easy to handle the product when it is packed in a particular wrapper or in a jar. Imagine the situation that you just went to a particular shop for purchase of chips, and the shopkeeper used to give you chips in your hands. So I think it will be very difficult to carry that or to have that particular chips. So the packaging provide the convenience to the consumer as well as to the producer
to producer for transporting the good, to consumer for carrying the good till the ultimate consumption. Next there comes the promotion. पैकेजिंग प्लेज अ रोल ऑफ साइलेंट सेल्समैन. पैकेजिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, साइलेंट सेल्समैन भी बोलते हैं. वाई? बिकॉज इट यूज टू provoke, it used to motivate, it used to enhance the tendency to consume the good. And generally when the particular products are of the children or the show product, in that condition the packaging used to play a very significant and important role. Most of the consumer get influenced out of the packaging and then they used to purchase the good. Next, that is the raising standard of health and sanitation. Nowadays the consumer have been become very much aware about the health and the sanitation, and packaging provide the basic facility of the sanitation. As the good is particular product is packed in a particular packet, it reduces the chances of contamination. People generally used to prefer the packed product over the loose product. ठीक है, पैक्ड प्रोडक्ट के लूज प्रोडक्ट के कंपैरिजन में जो कंज्यूमर्स हैं वो पैक्ड प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देते हैं. देर आर टू मेन रीजन. द फर्स्ट इज द कॉन्टामिनेशन, रिड्यूस चांसेस ऑफ कॉन्टामिनेशन, एंड सेकेंड वन, देर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ द अडल्ट्रेशन. जो मिलावट है उसके चांसेस क्या होते हैं, उसमें बहुत कम होते हैं. नेक्स्ट वन, दैट इज द प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन. Packaging help the customers to differentiate between goods on the basis of quality, as with the type of packaging customer can guess about the quality of the goods. That means कि जो consumer है, जो customer है, वो goods को differentiate कर पा रहा है. If the particular packaging is good, obviously the whatever the content it is containing, that will also good. So with the help of packaging as well, जो consumer है वो product को differentiate कर रहा है. Now there come the next element of the product mix, next and last element of product mix, that is labeling. And what is labeling, beta? Labeling means putting identification marks on the package and providing information to customer. क्या करना, आइडेंटिफिकेशन मार्क को उसमें पुट ऑन करना, और उसके साथ साथ क्या करना बेटा, जो इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर को प्रोवाइड करना. दैट इज द फंक्शन ऑफ द लेबलिंग. इट जनरली कंटेन्स द इंफॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ द प्रोडक्ट, name of manufacturer, content of product, expiry of product, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्ट्रक्शंस, वेट, प्राइस एक्सेट्रा. ये सब किस में पुट ऑन होता है बेटा, आपके लेबलिंग में पुट ऑन होता है. Dear students, if we talk about the types of labels, then there are two types of label. The very first is the simple tag. What is a simple tag? It is the very simplest form of labeling, in which the particular product is packed in a simple packet and the simple name of the particular product is written over there. For example, pulses, for example, rice, for example, dry fruits, etc. जनरली इट इज़ अडॉप्टेड बाय द स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स. कौन इसको अडॉप्ट करता है बेटा, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं वो इसको क्या करती हैं, अडॉप्ट करती हैं. इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं. देयर इज़ एन इमेज ऑफ कैश्यू नट्स. तो ये क्या है, एक पैकेट में आपको पैक कर रखा, ऊपर लिखा हुआ कैश्यू नट. तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल टैग. नाउ कम द सेकेंड वन, दैट इज़ द एलोबरेट labels. And what is the meaning of elaborate labels? As the name is signifying, a label that is showing the complete information regarding the product. See, elaborate labels are used by the reputed companies. They are very attractive and give complete information about the product to the customer. You can see the image over here. The Coca-Cola company is giving the complete information regarding the manufacturing, date of expiry, weight and price, and everything about the particular product. Now the last topic, that is the features of labeling. The very first, that is describe the product. Generally whatever the information is there, ingredients and every of the information is described in the labeling. So somewhere somehow the label helps in describing the product to the consumer. Second, identify the product. The label helps the customer to identify the product from the various types available. For example, we can easily identify, that means identify the product. It is from the customer point of view. When a lot of product are there, through the help of the labeling, the customer will come to know what is the product that we are willing to purchase. For example, a shelf is there in which a lot of chocolates are put there. So we can easily identify that it is the Cadbury or the Dairy Milk chocolate with the help of their color of the label.
The next one, that is helps in grading. With the help of label, products can be graded in the different categories. हम लोग उसको different parts में, different categories में क्या कर सकते हैं, divide कर सकते हैं. For example, if we talk about the soap Dettol, so you will see a lot of types of soaps are there of Dettol. Green color wrapper is there, light pink color wrapper is there, and blue color wrapper is also there. So इन रैपर के कलर से हम उसको ग्रेड कर सकते हैं कि ये बेसिक वाला है, ये आपका स्किन केयर वाला है पिंक वाला, और जो आपका ब्लू वाला है वो कूल मेंथोल वाला है. ठीक है, तो इन द सेम वे जो आपका लेबलिंग है वो आपकी ग्रेडिंग में हेल्प करता है. नेक्स्ट, दैट इज प्रमोट सेल्स. अट्रैक्टिव एंड कलरफुल लेबल्स एक्साइट कस्टमर. क्या करते हैं, जो कलरफुल और अट्रैक्टिव लेबल्स होते हैं वो कंज्यूमर को मोटिवेट करते हैं, प्रोवोक करते हैं, एक्साइट करते हैं कि कंज्यूमर उसको परचेज करे. और कब, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द कंज्यूमर गुड्स. जब भी हम लोग किसकी बात करते हैं, कंज्यूमर और सेमी ड्यूरेबल गुड्स की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में पैकेजिंग एंड लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करते हैं बेटा, प्ले करते हैं. एंड द लास्ट वन, दैट इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ. Some of the information have been made compulsory by the law to provide in the particular product, such as the to print about batch number, contents, maximum retail price, weight, volume, etc. All these things are compulsory from the government point of view, that every of the particular company have to uh, show all these information. Except in this, some other products are there in which the statutory warning is given, especially for the alcoholic product and the tobacco product. So through the label, that statutory warning is also provided to the ultimate consumers. You can see your image over here. The statutory warning: alcohol consumption is injurious to health. In every of the bottle of alcohol, every of the alcoholic product, this statutory warning will be there as per the compulsion of the rule of government, and it is, this compulsion is fulfilled through the help of the labels. So dear student, this is all about today what we have discussed. Today we have discussed about packaging, levels of packaging, different functions of packaging, thereafter labeling, types of labeling, and features of labeling. This is all about today. God bless you all.